Hello everyone. So my name is Adil Ali. I am a Fulbright PhD scholar. काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने फुलब्राइट स्कॉलरशिप अवेल की है, सो हाउ डिड यू गेट सेलेक्टेड, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस, क्या प्रोसेस था और क्या क्या आपने इसको किस तरह से अप्रोच किया. सो आई थॉट कि मैं सबको इंडिविजुअली आंसर करने के बजाय आई मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, दे कैन जस्ट वॉच द वीडियो एंड गेट ऑल द डिटेल्स दैट आई हैव. सो क्या आप भी वन ऑफ दोज लोग हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेकिन पता नहीं है कि शुरू कैसे करें? सो ये वीडियो आपके लिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो हर साल एक मुनफरद प्रोग्राम लॉन्च करता है पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए जो मास्टर्स या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहते हैं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स के, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है पूरी दुनिया में. और जो फुल ब्राइट कम्युनिटी है, इट्स अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम. सो आई हाईली रिकमेंड लोगों को कि वो उसके लिए अप्लाई करें. सो वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जो एप्लीकेशंस हैं 2025 कोहोर्ट के लिए वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं. और अब 2026 कोहोर्ट के लिए जो लोग एम कर रहे हैं, दे शुड बी वॉचिंग दिस वीडियो. सो हर साल इस तरह का एक एडवर्टीजमेंट फुल यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर आता है. और आप वहाँ पर देखकर यू गेट द आइडिया कि उसकी डेडलाइन क्या है एप्लीकेशन की. लेकिन जब तक वो ऐड नहीं आता, देर आर स्टिल थिंग्स जो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, so where do you get started? So first of all, you need to start preparing for your GRE exam. GRE is basically the graduate record examination. It's a great examination जो कि आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर आपको इवेलुएट करता है. For example, it has three components, main components. First of all, it will ask you to write an essay, which it will be checking your analytical writing skills. So it's an essay. You will get 30 minutes to write, और उसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर they can ask you to write an essay. Secondly, इट विल हैव अ वर्बल रीजनिंग सेक्शन, जिसके अंदर फर्दर दो सेक्शंस होंगे. एक सेक्शन के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे और एक में 15, एंड यू गेट अबाउट 18 मिनट्स फॉर वन सेक्शन एंड 23 मिनट्स फॉर सेकंड सेक्शन. लाइकवाइज एक और जो सेक्शन है जो वर्बल रीजनिंग है, इस बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज. इसमें वो कैब आएगी, इसमें ग्रामर आएगी, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, और उसमें सारा कुछ टाइप के रेलिवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. The third component of GRE is basically quantitative reasoning. ये बेसिकली मैथ्स का सेक्शन है. इसमें ज्योमेट्री आएगी, इसमें अलजेब्रा आएगा, राइट. इसमें इसका अपना एक पूरा सिलेबस है. यू गेट टू सी दैट. अच्छा, तो द पॉइंट इज कि इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट सेक्शन के अंदर. विल गेट अबाउट 21 मिनट्स टू सॉल्व दैट, एंड यू हैव 15 क्वेश्चंस इन द सेकंड सेक्शन, एंड यू विल हैव अबाउट 26 मिनट्स टू अटेम्प्ट दैट. So the entire test जो है, it is a shorter version now. It used to be long, but now it takes about 2 hours to complete. ठीक है, but it's like very extensive examination, so you have to prepare very well for this. So give yourself about at least 2 to 3 months to prepare for this if you are good at English and maths. And if you are not, for example, I belong to psychology background. I have not studied maths in a while now. So it took me longer to prepare for this. I think you should give yourself about 3 to 6 months if you are like not very used to attempting algebra or maths questions, and you don't have a great vocab. So अपने आप को prepare करने के लिए 3 से 6 माह का time दें. So that's why I'm thinking that this is the time to actually start preparing for GRE, so you could attempt it. Acha, some tips to attempt GRE. First of all, you should buy a reference book. Okay, there are many kind of reference books available. I used Barron's GRE handbook. It's a great book. It has vocab English के हवाले से. So English का section भी इसमें होगा, इसमें maths का section भी होगा. So for English आपके पास vocab आ जाएगी if you go through it. vocab की पूरी लिस्ट होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिस्ट जिसको कहते हैं. वो बुक के स्टार्टिंग में अवेलेबल है. और जो मैथ्स का सेक्शन है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन टेक्निक्स दी गई हैं, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बुक ले लें. सेकंड चीज़ ये है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हैंडी टूल इज़ द मैगूश ऐप. मैगूश की एक ग्रेट ऐप है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर वोकैब. ठीक है, इसमें फ्लैश कार्ड्स होते हैं. सो आई यूज दैट टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी, सो आई कुड डू बेटर ऑन द एग्जाम. इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट, so these are available online. अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट सर्च करेंगे फॉर GRE, यू विल गेट सम लिस्ट. इसके अलावा यू विल आल्सो गेट these lists on Barron's GRE, लेकिन they are like very extensive lists, so depending upon how many words list you want to get started with. I started with 333
high frequency word list. So आप पहले 333 words memorize कर लें. When you complete those, then you move on to bigger lists. अच्छा, इसके अलावा another tip is to practice for quantitative section. याद रखें कि सिर्फ टेक्निक समझ लेने से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ऑन द एग्जाम यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि विच टेक्निक टू यूज फॉर विच क्वेश्चन, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकें. मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, इट्स द टेक्निक दैट यू नीड टू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, ताकि जल्द से जल्द आप आंसर तक पहुंच सकें. बिकॉज रिमेंबर यू हैव अ डेडलाइन, टाइम, द टाइमर विल बी टिकिंग ऑल द टाइम. तो इसलिए आपको जल्द से जल्द उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप आंसर तक पहुंच सकें. और ये भी याद रखें कि if it's taking you too long to get to an answer, then that's not the right technique, that's not the best of the techniques to use. So reevaluate what you want to use. इसके अलावा I highly recommend that you use online mock tests to practice. So I used literally all of the online mock exams that were available there. So this is a great way to actually see how where you are standing and how much prepared you are and how much more you need to put in to get to score better. इसके अलावा आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज द की. एज आई मेंशन कि इफ इट इज टेकिंग यू टू लॉन्ग टू अटेम्प्ट एन क्वेश्चन, देन मे बी यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट. तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द की. Give yourself appropriate time for every question, and give attempt it at its best, and then move on to the next one. एक और very important tip is to give a GRE mock exam at the exam center. So US Education Foundation के जो ऑफिस हैं, जो prometric testing के जो offices हैं, over there you can actually go and reserve a mock exam for yourself. इसका मतलब ये है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो इट्स अ रियल एग्जाम इन्वायरमेंट, जहाँ पर बैठ के आप एक मॉक एग्जाम, एक प्रैक्टिस एग्जाम देंगे. They charge a very bare minimum fee for it. I think it used to be about 1,000 rupees or so. But if you go there, you can reserve and you can go and you. So what happens is when you go there, there will be people who will be attempting their actual GRE exam right next to you. So it's the exact same environment that you would get on the exam day, but it's a mock exam for you. So you really have you're practicing there in the real exam environment. So it's a great tool. I used it, and I think everyone should be doing a mock exam before attempting the actual exam. And what I did was I did a baseline mock exam. So right away, like as soon as I decided I want to do a GRE, I gave a mock exam just to see where I'm standing. And now I started, after that I started learning what I need to learn, how could I improve the score, and how much more techniques I could learn to to improve my score. So over the next 2 months I practiced, and then I gave my actual GRE. Okay, so once you're done with GRE, the next step is obviously the application for Fulbright Scholarship. You have to apply for it. For the scholarship, here are the main components. The first component is the essays part of the application. So you got to write two essays. Okay? Two essays. The first one is a personal statement, and the second is a study objectives. Personal statement is about yourself, about your struggle, about your journey so far. लाइफ में आपने क्या कुछ अचीव किया, कैसे किया, और हाउ डिड यू गेट टू वेयर यू आर राइट नाउ. और आपके जो एक्सपीरियंसेस थे उसने किस तरह से आपकी ज़िंदगी को शेप किया कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स और अ PhD इन द US. सो उस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको किस तरह से आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स ने हेल्प की, और ये उस बारे में एक पर्सनल स्टेटमेंट 700 to 750 वर्ड से एक ऐसे लिखना पड़ता है. और फिर उसी चीज़ को आपने रिलेट करना है अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, और हाउ कुड यू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, टू द सोसाइटी, और आपकी जो कम्युनिटी है उसके लिए. और वो जो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो क्यों ज़रूरी है, वन. सेकंड ये कि वो US में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, राइट. इस बात का भी आपको आंसर देना पड़ेगा कि वाई US, वाई दिस प्रोग्राम, एंड हाउ वुड इट बेनिफिट योर कम्युनिटी और योर सोसाइटी. ठीक है, इन तीन बातों का ख्याल रखें. और ये भी देखिएगा कि जो आप स्टडी का जो आपका एरिया है, इसमें क्या रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं. सो बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट इट व्हेन यू टॉक अबाउट इट. अच्छा, सेकंड चीज इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. यू नीड अबाउट 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. इसमें 2 एकेडमिक और 1 प्रोफेशनल भी हो सकता है, और 2 प्रोफेशनल और एकेडमिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एकेडेमिया और यू आर कमिंग फ्रॉम जॉब और सो. सो यूजुअली दे प्रेफर के 2 एकेडमिक रेफरेंसेस हों और 1 प्रोफेशनल हो. Third is the general questions of the application. It's a pretty long application. It will take you some time to complete it, but it would ask you general questions about your background, about your field of study, about your future plans,
those kind of things. So that shouldn't be very difficult to answer. So first thing important is to do those the GRE, the main thing. The second most important thing is to do those essays, because this will take you some time. हम मैंने इस तरह से किया था कि आई रोट माई एसेज ड्राफ्ट्स, और उसके बाद मैंने आई प्लेड अराउंड विद देम कि इसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ. मे बी हैव योर प्रोफेसर्स रीड इट, हैव सम पीपल इन योर क्लोज सर्कल रीड दोज एसेज एंड सजेस्ट हाउ कुड यू इम्प्रूव इट. कुछ लोगों को इसको पढ़ाएं जस्ट टू इम्प्रूव द ऐसे, और उसके बाद कीप इम्प्रूविंग इट, गिव इट सम टाइम. और उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो लोग जिन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको देना है, सो दे कैन टेक सम टाइम टू कंप्लीट इट एंड इट हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन अ पोर्टल. सो उनको कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं. सो व्हाट आई डिड वाज आई रिक्वेस्टेड देम इन एडवांस कि मुझे इस तरह से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, तो काइंडली इफ यू कुड राइट दैट एंड वंस यू गेट वंस आई सेंड यू अ लिंक टू अपलोड इट एंड देन यू कैन अपलोड इट लेटर ऑन. तो दैट हेल्प्स एक्चुअली. सो आप अपने जो रिकमेंडर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे कि भाई इस तरह से एक पोर्टल आएगा, वहाँ पे आपको लिंक हम भेजेंगे, आपको ईमेल आएगी US Education Foundation की तरफ से, and then you can just upload the letter that you are writing for me. So that's a great thing. लेकिन ये है कि be sure that these people you have contact with, and they can recommend you, they can write good words for you. Or I think not necessarily बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखें, but actually the truth about yourself. Okay, what are your qualities, what are your strengths, what are your weaknesses? So they talk about it, कि how this program is going to help you grow as a person and as a professional, right? So in बातों के ऊपर if they can comment on it. Usually they require longer recommendation letters. So उसका भी आप word limit देख लें कि कितनी word limit required है. So उस हिसाब से आपने एक letter of recommendation देना. Some tips for the essays that you're going to write. I suggest, like a personally experience कि ये है मेरा कि you do some introspection, right, and connect the dots about your life, about your story. Where did you get started, and where are you are right now? What do you want to do? Where do you want to go? Right. So connecting all the dots in your story is very very important. So when you create a story by connecting the dots, and you will know how your past experiences have helped you, and what are you going to do in the future with that, right? Why do you want to study your specific area? What motivates you to do that? Why are you so passionate about it? Talk about it, and why from USA. And then you also need to illustrate how this degree program is the missing piece of the puzzle that could help you make a significant contribution. अब बताना ये है कि ये जो प्रोग्राम आप करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ मेंट फॉर यू. अगर आप ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, और आप औरों की ज़िंदगी को भी इससे बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. ठीक है, तो इसको आपने पूरा इलस्ट्रेट करना है कि ये जो प्रोग्राम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हाट्स द नीड. पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं तो वहाँ से क्यों नहीं करते, वाई यू आर अप्लाइंग टू US. ठीक है, इन सब सवालों के जवाबों को बड़ा क्लियर करना है आपने अपने एसेस के अंदर. One more tip is to be very clear about your research ideas. I did mention this previously कि आपको अपने एरिया का बड़ा स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि क्या एरिया में आप PhD या मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें क्या रिसर्च हुई हुई है पहले. वाई जो आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वहाँ के प्रोफेसर का क्या काम है इस पे, और हाउ डज इट इम्पैक्ट यू, हाउ डज इट बेनिफिट्स यू. ठीक है, तो वाई दैट प्रोग्राम इज सो रेलिवेंट टू यू, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा thoroughly research the relevant programs in the US and review profiles of professors for their research interest. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. फॉर इन माई केस आई वॉन्टेड टू स्टडी फोरेंसिक साइकोलॉजी. ठीक है, सो फोरेंसिक साइकोलॉजी के जितने रेलिवेंट प्रोग्राम्स थे उनको मैंने सॉर्ट आउट किया कि US के अंदर कौन कौन से हैं. आई वेंट ऑन गूगल, मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर गया, मैंने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स पढ़ी कि वो किस किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका क्या काम है इसके ऊपर, और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लोग कौन से हैं जो मेरे प्रोग्राम या मेरे इंटरेस्ट से जिनका मैच करता हूँ इंटरेस्ट. वो वाले सारे प्रोग्राम्स मैंने नोट डाउन किए, और वो मैंने कहा कि मैं आई वांट टू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज़. सो US एजुकेशन फाउंडेशन आस्क्स यू फॉर अबाउट 4 to 5 प्रोग्राम्स कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं. यू कैन मेंशन दोज एंड दे डू कंसिडर इट फॉर यू, कि जब आपकी फाइनल प्लेसमेंट होगी तो वहाँ पे आपको प्लेस कर सकते हैं.
But anyways, a word of caution, despite all the effort, आप बहुत सारी effort करेंगे इस पूरे application process के अंदर, and you may still not get the scholarship every time, because जाहिर है उन्होंने एक limited pool of candidates select करने होते हैं, and not everyone gets a scholarship every year. ठीक है तो, but you don't give up on that, because there are still a lot of opportunities out there other than Fulbright. There are many scholarships that are offered by the universities directly, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. और टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई अप्लाइड फॉर द Fulbright for the third time last year, जब when I got selected. ठीक है, so it sometimes takes more than one attempt for you to understand what's the process is, but no need to like uh, uh, think badly about yourself. You're gonna be fine. You're gonna be okay, and we all are like the same. Some people think जो Fulbrighters हैं, they are very different people. बहुत ज़्यादा bright लोग हैं. So in my experience, I think it's like the normal people that exist. हम मेरे आपके जैसे सब जैसे लोग हैं, but they do apply, they do keep applying, and they don't give up. So not giving up is the most important thing. The second most important thing is persistence and hard work. You need to put in hard work, and persistent. You need to keep trying. Have clarity in your mind. What do you want to do? Where do you want to go? And why? Right? So have that clarity in your mind. Once you do that, and once you have a story to tell, then I think you'll be fine. You'll do great. Thank you very much. If you have any questions, put those in the comment section. I'll be happy to answer those. Thank you. Bye bye.